हेलो एवरीवन वेलकम टू आई केयर क्लासेस आगु आपनकर ओटीटी एग्जाम आसुची सेथिबाई आई केयर क्लासेस नहीं आसीची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 रो किछि चाइल्ड पेडागोजी आउ सब्जेक्ट पेडागोजी रो किछिटा क्वेश्चन देखौन चलन देखिबा किछिटा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन from ages 3 to 5 growth in socio emotional skills includes all of these except तो क्वेश्चन पचार आमको कौन ना 3 रु 5 वर्षर शिशु मानक मध्यरे देखा जाउथुबा सामाजिक आवेगात्मक दक्षतार विकास रे केउ गुडी को देखा जाए एवं कोटा देखा जाए नाही देखिबा किछटा ऑप्शन कोन अछि हमरा ना जेंडर आइडेंटिफिकेशन माने क्लासिफाई से कला कोन ना मदर फादर and other relative को से चिन्हिबा सिखिला then development of sense of right और wrong भूल कौन ठीक कौन खाइले शिशुटी खाऊ नाही ता मामा ताको बाडौछि शिशुटी पाठ पढु नाही बापा ताको पाटी करूछनी एगुडी को कोन ना से जानता मु पाठ न पढिले माड खाइबी कि न खाइले मु गाली सुनिबी से राइट और रॉन्ग विषय रे क्लासिफाई करला then learn the values of their society एटा हायर ऑर्डर रही जाउची जोडा कि देखा जिवो हमर कोथरे को स्टेज रे देखा जिवो ना एडोलसेंट स्टेज रे हमर देखा जिवो कोन ना हायर learn the higher values of their society then formation of peer relation कोन ना peer relation संग साथी बेसी करिवो शिशु को टाइम रे ना 3 to 5 एज भितरे शिशु बेसी खेल कूद समय बितेब ताले मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन लर्न द वैल्यूज ऑफ देयर सोसाइटी एडोलसेंट पीरियड रे हबो ना कि हमें 3 to 5 ईयर एज रे बा सेंसरी मोटर स्टेज रे एटा देखा जिवो नाही तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर now in which of these stages children have a growing peer orientation yet they are strongly influenced by their family ना को स्टेज रे शिशु निज सांगसाथी मानक सहित बेसी टाइम बितेई थाए आ तांको मानक से मानक द्वारा कोन इन्फ्लुएंस हेई थाए किंतु फैमिली थारो कम इन्फ्लुएंस हेई थाए ना राइट आंसर हबो कोन ना लैटर चाइल्डहुड काई ना इयरली चाइल्डहुड रे जो 3 to 5 इयर्स एज रहिला से अवस्था रे से कोन ना केवल खेल कूद नाच खुशी इगोसेंट्रिज्म से डेवलप है न थाए किंतु लैटर चाइल्डहुड कोन ना ए टाइम रे से धीरे धीरे सांग मानक सहित अधिक टाइम स्पेंड करे और से माने जहा कहंती सेया ही से राइट भाबे सेति पई कोन इन्फ्लुएंस अधिक होनी कोथरे लेटर चाइल्डहुड पीरियड रे से अधिक इन्फ्लुएंस होंती एडोलसेंस रे तो से माने कोन कैरियर ओरिएंटेड हे जानती लेट टीनेज इयर्स रे से माने कम इन्फ्लुएंस होंती सांग साथी मानक द्वारा एवं जो हमर पाठ पढ़ा ऊपर से बेसी फोकस करंती सेति पई लेटर चाइल्डहुड रे कोन ना फैमिली थारो मध्य अधिक स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कहा द्वारा होंती ना पियर मानक द्वारा तो हमर करेक्ट ऑप्शन कोन हबो ना ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिबा जे व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म means learners actively engage in the learning process constructivism कौन कहिला ना learners do not acquire learning passively but they are actively engaged in the learning process create their own learning by understanding and their own experiences तो हमें फर्स्ट कथा कोन जानले ना से एक्टिवली एंगेज रहिबो क्रिएट करिबो ओन नॉलेज
तो ऑप्शन देखिबा कोन कोन ना कोटा एठी पचार नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म तो ऑप्शन नंबर 1 कोन ना द फंक्शन ऑफ कॉग्निशन इज एन एडाप्टेशन ऑफ रियलिटी ऑप्शन नंबर 2 knowledge is embedded in the social context option number 3 every child is an active constructor of knowledge option number 4 कोन ना there is only one ultimate truth तो cognition means knowledge तो constructivism कोन बेसिकली फोकस कला क्रिएट कला कोन ना नॉलेज क्रिएट करिवारे फोकस कला सेति पय एटा तो करेक्ट नॉलेज इज एम्बेडेड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट सहित कोन ना नॉलेज रो लिंक रहिबा दरकार नहले कोन ना हमर वन नॉलेज क्रिएट हे परिबो नाही एक्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को हम यूज करी कि किछि नुवा जिंस करबा सेति पय सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी लिंक करियो को पड़िबो तो एवरी चाइल्ड इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज हम प्रथमे से जिंसटा देखि देले तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 आर करेक्ट देयर इज ओनली वन अल्टीमेट ट्रुथ कंस्ट्रक्टिविज्म कले कहिला कोन ना क्रिएट करबा तो क्रिएट करिया माने जिंस हम बहुत किछि जानिबा तो केवल गोटे ट्रुथ केमदि होबो तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 कोन आसिला ना अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन एट व्हिच ऑफ द स्टेजेस टेंड टू बी इगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ others पियाजेंकर थ्योरी हम बुझी दबा कोन ना एटा जेतु इंपोर्टेंट आपण मानकर जो ओटीटी एग्जाम्स आसीबो पेडागोजी रो मेन होच हमर थ्योरी तो थ्योरी रो मेन बेसिकली पियाजे होचन गोटे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी थ्योरिस्ट तो हम देखिबा पियाजे he is the American Swiss psychologist अमेरिकन स्विस साइकोलॉजिस्ट से कौन ना कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म रो गोटे फॉलोअर बा सपोर्टर कंस्ट्रक्टिविस्ट से कौन ना इंटरेस्ट कहा पियाजे मोर इंटरेस्ट बेसिकली थिला कौन ना चाइल्ड रो ग्रोथ और डेवलपमेंट चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उपरे से बेसिकली देले ना कोन ना 4 स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड चाइल्ड रो डेवलपमेंट कोन ना चारिटा स्टेज द्वारा 4 स्टेजेस चारटा स्टेज रे होई थाए कोन कोन ना 1 सेंसरी मोटर स्टेज sensory motor second one is pre-operational third one is concrete operational fourth one is formal operational सेंसरी मोटर स्टेज रे कोन ना चाइल्ड रो कोन डेवलपमेंट सब होबो ना सेंस ऑर्गन रो डेवलपमेंट होबो ऑब्जेक्ट परमानेंस देखा देबो को स्टेज रे ना सेंसरी मोटर स्टेज रे हमर देखा जीवो कोन ना देखा गला कोन ना ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंस ऑर्गन रो डेवलपमेंट होबो sensory motor stage is otherwise called as play age then कोन रहला ना प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कोन ना चाइल्ड रो इलॉजिकल थिंकिंग डेवलप होबो इलॉजिकल थिंकिंग हे गला देन हमर कोन देखा जिवो ना हमर इलॉजिकल थिंकिंग डेवलप होबो से क्लासिफाई ठीक से क्लासिफिकेशन करि परिबो नाही
ऑब्जेक्ट मध्य डिफरेंस करि परिबो नाही कंक्रीट ऑपरेशनल रे कोन ना हमर इंडक्टिव थिंकिंग डेवलप हबो इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हबो इंडक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हबो फॉर्मल ऑपरेशनल होची सबुठारु हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बाय पियाजी एथरे कोन ना से चाइल्ड हाइपोथेटिकली सब जिंस को चिंता करिवो हाइपोथेटिकली चिंता करिवो देन हमर कोन ना लॉजिकली चिंता करिवो डिडक्टिव थिंकिंग एठी डेवलप हबो कंक्रीट ऑपरेशनल रे इंडक्टिव हमर फॉर्मल रे कोन ना डिडक्टिव थिंकिंग एंड रीजनिंग डेवलप हबो तो एठी कोन देइथिला ना हमर इगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स तो आमे एठी कोन आमे देखतिले सेंसरी मोटर रे हमर कोन देखतिले सेंस ऑर्गन रो डेवलपमेंट देन हमर सेंस ऑर्गन डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट परमानेंस प्री ऑपरेशनल रे कौन देखिले हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कौन देखिले ना इलॉजिकल थिंकिंग इगोसेंट्रिक नेचर प्री ऑपरेशनल डेवलप कौन है जिमो ना इलॉजिकल थिंकिंग और इगोसेंट्रिक नेचर देन हमर कौन रहिला ना कंक्रीट ऑपरेशनल रे कौन देखिले ना हमर नो मोर इगोसेंट्रिक कोथरे ना हमर कंक्रीट नेचर कंक्रीट ऑपरेशनल रे देन डेवलप होबो कंक्रीट ऑपरेशनल रे कोन ना लॉजिकल थिंकिंग आउ हमर इंडक्टिव रीजनिंग देन फॉर्मल ऑपरेशनल रे हमें कौन देखिले लॉजिकल थिंकिंग एठी हाँ एठी लॉजिकल हमरा इलॉजिकल होची प्री ऑपरेशनल लॉजिकल थिंकिंग विथ हाइपोथेटिकल सेठी कोन ना जिंस को वेरियस सॉल्यूशन रे देखिबो सेति में हमर क्वेश्चन कोन पचारची ना चिल्ड्रन एट व्हिच ऑफ दिस स्टेजेस टेंड टू बी इगोसेंट्रिक तो इगोसेंट्रिक हमर कोड देखिले ना प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हमें देखिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जहां भी आसीबो पियाजेंकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऊपर तो क्वेश्चन हमें सहज रे करि परिबा से गुडा टिके पॉइंट गुडा टिके मन रख देबे नेक्स्ट टाइम जीवा कोन 5 number question which of these is not a development change taking place in the formal operational stage रे या पूर्व में डिस्कस कौन कले ना हमर कौन आसी गला फॉर्मल रे हमर कोन ना हाइपोथेटिकली हमें रीजनिंग करि परिबा डिडक्टिवली हमें थिंक करिबा लॉजिकल थिंक ऊपर अति गुरुत्व दबा फॉर्मल स्टेज कोन ना उडा हायर ऑर्डर स्टेज which of this not a development कोटा गोटे विकास नुहे जोटा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे होई थाए तो चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड टू बी इगोसेंट्रिक हमें को स्टेज रे करथिले ना प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हमें कोन देखिबा ना इगोसेंट्रिक and struggle to see things from the perspective of others at this stage the adolescent next option at this stage the adolescent or young adult begin to think abstractly reason about hypothetical problems hypothetical हम कोड पढ़थले ना फॉर्मल ऑपरेशनल रे शिशुर कोन ना hypothetical problems से सॉल्व करी पारिबो the teen begin to think more about moral, philosophical, ethical, social, political issues that require theoretical and abstract
reasoning, abstract, theoretical, moral, philosophical, ethical issue ଉପରେ କେବେ କରି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କରିବ କୋଉ ସ୍ଟେଜ ରେ ଚାଇଲ୍ଡ ର ବିକାଶ ହବ ନା ଫର୍ମାଲ ଅପରେଶନାଲ ସ୍ଟେଜ ରେ ହବ। ଦେନ୍ ଆମର begin to use deductive କଥା ଆସିଲା ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଫର୍ମାଲ ଅପରେଶନାଲ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ତ ଆମର ଏଇ ତିନିଟା କଣ ନା ଗଲା ଆମର ଏଇ ତିନିଟା प्रिंसिपल कौन हे जीवो ना हमरा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रो किंतु इगोसेंट्रिक जोटी आसिला सेठी कोन हम लिखबा ना प्री ऑपरेशनल। तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 a balanced development of a child happens due to balanced development child रो केउ केउ कारण को फैक्टर बसत होई परिबा ना हमर गोटे होची हेरिडिटी केवल हेरिडिटी इवोल्यूशन हेरिडिटी मींस वंशानुगुण इवोल्यूशन ना एनवायरनमेंट परिवेश ना बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो सबुठारो एप्रोप्रिएट आंसर कोन ना हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वंशानुगुण एवं कौन परिवेश बोथ वंशानुगुण परिवेश मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जोड़ा कि बैलेंस करी गोटे चाइल्ड बा शिशुर विकास उपरे। तो करेक्ट ऑप्शन एठी कौन ना हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ दिस is not a main characteristics of a good learning objective। भलो शिक्षार कौनसीटी गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुह नॉट पचारछि क्वेश्चन हम टी लक्ष्य करबा कोटा पचारछि कोटा न पचारछि तो एटी पचारछि गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोटा नुहे। तो हम टी एनालिसिस करबा ऑप्शन रो ऑप्शन नंबर 1 कोन अछि ना द लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड आइडेंटिफाई ए लर्निंग आउटकम। गोटे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन आइडेंटिफाई करिवो ना लर्निंग आउटकम करेक्ट। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी कंसिस्टेंट विथ द कोर्स गोल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें कंसिस्टेंट रखिबा कहा सहित ना कोर्स रो गोल सहित हमको कौन दरकार हम से अनुसार ऑब्जेक्टिव टा करबा। देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड हैव ए मीनिंगफुल आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन ना मीनिंगफुल आउटकम दबो इंस्ट्रक्शन ऊपर। Then next option कौन रहला ना the learning objective should be general and not cater to a specific set of learner। यदि learning objective दा set of गोटे निर्दिष्ट set of learner मानकर general उद्देश्य को फुलफिल करि परिबा नाही तो learning objective टा गुड की गुड नुह not good। तो एटा गोटे भलो कैरेक्टरिस्टिक्स नुह कोटा ना the learning objective should be general and not cater specific set of learners। the correct answer कौन होबेटी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जीवन the thoughts as sympathy pity maternal love attachment etc belong to which category of attention। तो हमें देखिबा कोन ना sympathy pity maternal love अटैचमेंट एक्सेट्रा। तो एगुड़ा को जो हम देखु जने सिंपैथी पीटी मैटरनल लव अटैचमेंट एगुड़ा कौन एब्स्ट्रैक्ट कौन एब्स्ट्रैक्ट जोड़ा को हमें टच स्मेल सी एंड हियर कौन करि परिबा नाही। केवल करिबा कौन सिंपैथी पीटी मैटरनल लव अटैचमेंट को केवल कौन करि परिबा ना फील करि परिबा फील एटा कौन ना हमर सब इमोशन सब कौन हमर इमोशन बा इमोशनल एस्पेक्ट रे जाउची। तो कौन एटा आसला हम देखिले ना एटा सब कौन एब्स्ट्रैक्ट जोड़ा के हमें
डू नॉट टच स्मेल सी एंड हियर तो एटा कोन एब्स्ट्रैक्ट अटेंशन रे जीव तो करेक्ट आंसर एठी कोन हो एब्स्ट्रैक्ट अटेंशन ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट कोन ना क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा कोन अछि ना द सोशल लर्निंग थ्योरी दैट एम्फसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग सोशल लर्निंग थ्योरी ऊपर एठी आसला सोशल लर्निंग थ्योरी इंपोर्टेंस देला ऑब्जर्व करबा ऊपर मॉडलिंग द बिहेवियर ऊपर एटीट्यूड एंड इमोशनल रिएक्शन ऊपर ऑफ अदर्स प्रपोज्ड बाय व्हिच ऑफ दिस एमिनेंट आमे जानचंदी कोन ना भाइगोट्स्की कोन देथिले सोशियो कल्चरल थ्योरी ऊपर पियाजे देथिले एबे पढिले कोन ना कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट ऊपर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट ऊपर देन बांदुरा काहा ऊपर देले ना सोशल लर्निंग ऊपर टिके टिके हमें जानिबा टिके थ्योरी विषय थ्रू जान टिके जानिबा क्वेश्चन अटेंड हम कर परिबा ना कोन ना सोशल लर्निंग थ्योरी कोन देथिले बांदुरा देथिले से बेसिकली डेवलप करथिले सोशल लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स बा 3 मॉडल देथिले केतेटा ना से तीनटा कोन कोन ना गोटे थिला कोन हमर लाइव मॉडल देन थिला हमर वर्बल इंटरेक्शन मॉडल देन हमर थर्ड थिला कोन ना सिंबॉलिक से कौन देथिले ना लाइव मॉडल डायरेक्ट आमे जाई कि कोन ऑब्जर्व करबा लर्निंग को वर्बल इंटरेक्शन मॉडल कम्युनिकेशन थ्रू रे आमे केमते ऑब्जर्व करचंदी सिंबॉलिक थ्रू विजुअल आर्ट द्वारा आमे केमते ऑब्जर्व करचंदी तो राइट आंसर एटी कोन ना सोशल लर्निंग थ्योरी के देथिले बांदुरा जदि हमको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट बा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऊपर के देथिले ना पियाजे सोशियो कल्चरल थ्योरी के देथिले ना वाइगोट्स्की तो मन रहिला एमिति तो एठी कोन करेक्ट आंसर होबा बांदुरा नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 10 mentoring from a teacher helps impact learning of student in all these 3 ways other than गोटे टीचर जदि गोटे स्टूडेंट को मेंटर करूची देन कौन कौन से प्रोवाइड करिवो या भितर आ कोटा करि पारिबो नाही गोटे टीचर गोटे मेंटर करला बेले कोटा करिवो नाही एनकरेज करिवो राइट प्रोवाइड सेफ स्पेस टू शेयर देयर थॉट एब्सोल्युटली राइट जजिंग देम जज तो केबे टीचर करिवोनी मेंटर करिवा बेले काना से डिमोटिवेट कर दबो स्टूडेंट को जदि जज करूची देन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एटा तो मस्ट गोटे टीचर कोन ना स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस दबो ना तो करि पारिबो एटी राइट आंसर ताले करबो से पचार थिला ना अदर देन कोटा को छाडी की जजिंग देम टीचर केबे तो स्टूडेंट को जज करिवो नाही ताको एनकरेज करिवो कॉन्फिडेंस दबो आ ताको एनकरेज करिवो कोथि पई ना शेयर देयर थॉट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 11 for which of these types learners role playing might be the key to help them connect with the lesson एडी कोन चलना ना को प्रकार लर्नर रोल प्ले माध्यम रे पढि पारे रोल प्ले माध्यम रे
को श्रेणी रो लर्नर्स माने बेटर कनेक्ट करि परिबे लेसन को त हम जानिबा मैथमेटिकल लर्नर्स मींस केवल फॉर्मूला रे जो माने बेटर पढुतबे फॉर्मूला बा रोट मेमोराइजेशन जो मानकर भलो देन ओरल कोन ना केवल साउंड रे से बेटर कनेक्ट करिवे विजुअल कोन ना केवल देखि कि जो माने बेटर कनेक्ट करिवे किंतु काइनेस्थेटिक कोन ना एंटायर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व रहइबो हमर ग्रोस मोटर जोडा करहिला बॉडी पार्ट्स एंड माइंड बा थिंकिंग काइनेस्थेटिक कोन ना तार सब हाथ गोड़ मुंड जो थ्री यूज है कि से कनेक्ट करि परिबो कोन ना लर्निंग लेसन को रोल प्ले माध्यम रे कोन ना हमर सब जेते बेले गोटे पिला ड्रामा करूची सेते बेले कोन तार सब दरकार होची से केमते ठिया होची केमते कथा कहूची केमते अभिनय करिबा द्वारा तार लर्न होची सेटा देखिबो कहा को सेट लर्नर जिबे से माने ना काइनेस्थेटिक लर्नर रे जिबे द रोल प्लेइंग might be the key to help them connect with the lesson from which type of learners na kinesthetic learners तो एठी करेक्ट आंसर कोन ना ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट जिबा डेवलपमेंट एंड लर्निंग occur in development and learning occur in and are influenced by which of these डेवलपमेंट और लर्निंग कहा द्वारा इन्फ्लुएंस हो परिबो ना केवल सोशल एस्पेक्ट द्वारा ना केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट द्वारा ना ओनली कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट द्वारा ना ऑल सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट द्वारा तो डेवलपमेंट और लर्निंग ऑकर सेते बेले हो परिबो जेते बेले सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस करिवे तो एठी कोन करेक्ट आंसर हला ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 13 all of these factors contribute to the lower rate of girl child education कोटा को या भितर को फैक्टर टा जोटा कि गर्ल चाइल्ड मानकर एजुकेशन रो लोअर रेट रे गोटे फैक्टर नुह चाइल्ड मैरिज गोटे फैक्टर माल न्यूट्रिशन गोटे फैक्टर लो सेल्फ एस्टीम मध्ये गोटे फैक्टर किंतु नो स्पेस इन स्कूल जदि गोटे विद्यालय रे स्थान अभाव रहुची तो सेटा गोटे एक्सक्यूज नुह जी गर्ल चाइल्ड मानकर एजुकेशन रे इफेक्ट पड़िबो कि लोअर रेट आसीबो जदि कोन रहउची ना नो स्पेस इन स्कूल्स तो एठी कोन ना करेक्ट आंसर कोन ना नो स्पेस इन स्कूल्स एडा गोटे रीजन नुह जे गर्ल मानकर लोअर रेट ऑफ एजुकेशन आसीबो तो नेक्स्ट देखिबा कोन ना क्वेश्चन नंबर 14 which of these is not an effective strategy not an effective strategy for ensuring education to underprivileged and lower income group unprivileged and lower income groups मानकर education को ये जो ऑप्शन चारटा देइछि कोटा एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नुह देखिबा ना मॉनिटरिंग अटेंडेंस एंड रिटेंशन तो मॉनिटर करा होची तर अटेंडेंस और रिटेंशन को ऑफ चाइल्ड फ्रॉम वीकर सेक्शन रेगुलरली तो एटा तो गोटे मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आइसोलेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड कल्चर सेटिंग ऑफ अल्टरनेटिव स्कूलिंग फैसिलिटी जदि हमें सेट करबा अल्टरनेटिव स्कूलिंग फैसिलिटी तो नो स्पेस फॉर नो स्पेस जो हमर थिला नेक्स्ट कोन हम देखतिले जोटा नो स्पेस इन स्कूल्स से जो प्रॉब्लम टा हमर कोन ना सॉल्व हे जिवो कहा द्वारा ना जदि हम अल्टरनेटिव स्कूलिंग फैसिलिटी करूछंदी स्पेशल टीचिंग सपोर्ट एज पर नीड जदि हम एजुकेशन बा स्पेशल टीचिंग दोजन तो एटा कोन ओडा इफेक्टिव स्ट्रेटजी तो सबुठारु एप्रोप्रिएट आंसर कोन ऑप्शन नंबर 2 आइसोलेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड कल्चर एटा ओडा इफेक्टिव स्ट्रेटजी नुओ कहउथि पई ना फॉर एंश्योरिंग एजुकेशन टू अनप्रिविलेज्ड एंड लोअर इनकम ग्रुप्स नेक्स्ट देखिबा कोन ना क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15 कौन रही ना which of these is not an element of a program for a student who is gifted and talented not पचार सब क्वेश्चन को टिके लक्ष्य करथबा जे कोन पचार छी ना नॉट पचार छी नॉट एलिमेंट को प्रोग्राम है ना प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट हु इज गिफ्टेड एंड टैलेंटेड पढ़दबा टिके ऑप्शन गुडा कोन ना इट एंश्योर दैट द स्टूडेंट इज प्लेस्ड ओनली अमंग सिमिलरली एजेड स्टूडेंट irrespective of interest or academic level इटा टिके सिमिलरली ए स्टूडेंट इरेस्पेक्टिव ता इच्छा विरुद्ध रे हम देखो कोन एकेडमिक लेवल्स अनुसार ताको प्लेस करिबा तार से गिफ्टेड और टैलेंटेड सेम लेवल रा पिलांक सहित ही हमें कोन करबा ना ताको प्लेस करिबा देन नेक्स्ट देखिबा कोन ना इट इज डिफरेंट इन स्पेस स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन कीपिंग विथ द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द एक्सप्रेशनलिटी नेक्स्ट देखिबा कोन ना इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट इंटरैक्ट सोशली एटा तो भलो ताको कोन दबा स्कोप दबा से इंटरैक्ट करिवो इंटरेक्शन करिवो सोशली हो कि एकेडमिकली हो ता पीयर मानक सहित इट गोस बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ स्कूल इनटू लार्जर कम्युनिटी आमे तो आजिकली जो हमर बाहर छि सीसी कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रे हमें बहुत स्कॉलास्टिक आउ को स्कॉलास्टिक एरिया को मध्य देखुचंदी इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम चाइल्ड र केता डेवलप हो तो एटा गोटे भलो इफेक्टिव एलिमेंट किंतु फर्स्ट ऑप्शन जो देखिला में इट एंश्योर दैट द स्टूडेंट इज प्लेस्ड ओनली अमंग द सिमिलरली एजेड स्टूडेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट आजिकली हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऊपर कथा कहता बेले ये कहले इरेस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट ताको हमें प्लेस करबा तर एकेडमिक लेवल देखिकी एटा इट साउंड्स रॉन्ग तो सेति पे एठी कोन ना करेक्ट ऑप्शन कोटा हबो ऑप्शन नंबर 1 नॉट एन एलिमेंट कोन ना ऑप्शन नंबर 1 देन देखिबा नेक्स्ट कोन आसिला ना समग्र शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान जोड़ा ही कौन ना हमर एसएससी पार्ट ऑफ एसएससी सर्व शिक्षा अभियान एटा केबे इंप्लीमेंट हेतिला ना 2018 रे हैला को लेवल रो पिला मानन पई हैला ना प्राइमरी ठु आरंभ करी कि सेकेंडरी पर्यंत हमर समग्र शिक्षा अभियान अभियानटा हमरा एप्लीकेबल हैला समग्र शिक्षा द इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसेस ऑन ऑल ऑफ दिस अदर देन कोटा को छाड़ी की तो समग्र शिक्षा अभियान कहा को एलिमेंट बा फैक्टर ऊपर फोकस कला जो एलिमेंट की फैक्टर बा एस्पेक्ट या भीतर कोटा नुह देखिबा हमें ना क्वालिटी एजुकेशन ऊपर समग्र शिक्षा फोकस करथिला प्रमोटिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऊपर भी फोकस करथिला एनहांसिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट एटा ऊपर भी फोकस करथिला किंतु इंक्रीज करिवो सोशल एंड जेंडर गैप इन द स्कूल एजुकेशन एटा से केबे भी रेकमेंड करे नथिला तो से पचारची कोन ना कोटा गोटे अदर देन छाड़ी की कोटा गोटे नो लॉन्च करथिला कोन कोन ना क्वालिटी एजुकेशन प्रमोटिंग वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एनहांसिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट से इंक्रीज करबा कथा कहि नथिला से करथिला कोन ना इराडिकेट द सोशल एंड जेंडर गैप्स इन द स्कूल एजुकेशन
किए कहितला ना समग्र शिक्षा। तो एठी कोन ना हमर करेक्ट ऑप्शन कोन हबो ना ऑप्शन नंबर 3 नॉट एन फैक्टर और एस्पेक्ट ऑफ समग्र शिक्षा जोटा कि लॉन्च करथिला से। नेक्स्ट देखिबा 17 नंबर अंडर अचीविंग student but under achieving children show most of these characteristics other than under achieving children जो माने रहिले सेमानंकर कोटा गोटे characteristics नुह not a characteristics ସେମାନେ କଣ ନା ପାର୍ଟିସିपेट କରିବେ एक्टिवली एंड एंगेज हेबे क्लासरूम डिस्कशन रे लो सेल्फ इमेज लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन द स्कूल वर्क यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड एक्सक्यूज अंडर अचीविंग चिल्ड्रन माने मोस्टली कौन करिवे ना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करिवे एक्सक्यूज देबे लैक ऑफ इंटरेस्ट रहइबो तांकर क्लासरूम रे लो सेल्फ इमेज रहइबो किंतु जो माने पार्टिसिपेट एक्टिवली करूथबे ओ एंगेज होथबे क्लासरूम डिस्कशन रे से माने कोन ना हायर अचीविंग चिल्ड्रन ने से माने जिवे ना कि अंडर अचीविंग रे। तो इट करेक्ट आंसर कोन ना ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड एंगेज इन द क्लासरूम डिस्कशन। नेक्स्ट देखिबा कोन ना क्वेश्चन नंबर 18 socially backward children can be integrated into the classroom using which of these techniques को टेक्निक को यूज करिकी इंटीग्रेट करा जीवो कोन ना सोशली बैकवर्ड चिल्ड्रन कोन करिवे क्लासरूम रे इंटीग्रेट करा जीवो को टेक्निक यूज करिकी ना इंक्रीजिंग सोशल एंड जेंडर गैप्स इन द स्कूल एजुकेशन यूजिंग बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन insisting on these children being at par with the other children in the class, citing abstract examples rather than those experienced by child on a day-to-day basis. तो एठी कोन मोस्ट appropriate आंसर कोन हबो ना तांको गोटे व्हिच ऑफ दिस टेक्निक को टेक्निक को हम यूज करिकी सोशली बैकवर्ड चिल्ड्रन मन को इंटीग्रेट करि परिबा क्लासरूम रे ना सेमानक मध्यरे कोन करबा तांको इंसिस्ट करबा जे सेमाने कोन ना तांकर आट पर लेवल को यूज करिकी सेमाने अन्य पीयर बा क्लासरूम रे जो माने तांकर संग साथी रहिले तांको सहित कोलैबोरेटली लर्निंग करिके सेमारा कोन ना निजर लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करिवे। तो एठी कोन हबो ना ऑप्शन नंबर 3 हे जबो करेक्ट। तो देखिबा नेक्स्ट देखिबा कोन ना क्वेश्चन नंबर 19 a multi-grade teacher must be able to facilitate all these aspects कोड हम कोन देखिबा ना मल्टीग्रेड टीचर कोन कोन फैसिलिटेट करिवो क्लासरूम रे या भीतर कोन करिवो कोन न करिवो से पजे जे कोटा करिवो नाही तो हमें देखिबा कोटा करिवो नाही आगे अलगा कर दबा से कोटा कोटा कर परिवो। Teacher should not only be a provider of knowledge but should also be a facilitator of learning both at a group level and on a one-to-one basis. से केवल नॉलेज गिवर न है कि से कोन ना डिस्कशन करिवो फेस टू फेस वन टू वन बेसिस रे एटा ठीक अछि फैसिलिटेटर रे जाउची टीचर तो be able to motivate them to learn and guide them through their learning materials तांको मोटिवेट करिवो TLM द्वारा। Teachers should be able to understand difference between peoples and cater accordingly से कोन करिवो ना इंडिविजुअली पीपल मान को डिफरेंशिएट करिवो तांकर नीड आ इंटरेस्ट देखि तांको लर्निंग प्रोसेस कोन स्टार्ट करिवो बा दबो देन कोन करिवो ना टीचर शुड एम टू स्टे विदिन ए करिकुलम ensure that all children are trained as per the curriculum टीचर केवल करिकुलम सहित अटैच रहिबो कनेक्टेड रहिबो पिला मानकु मध्ये सेही परि भाबे गढेइबो कोन ना करिकुलम देखिकी। तो एटा कोन हे जाउची ना इनअप्रोप्रिएट हे जाउची मल्टी ग्रेड टीचर
कैरेक्टरिस्टिक्स रे सेति कोन ना एगुडा गुडे जीवो ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 फैसिलिटेट करूची काहाकू ना मल्टीग्रेड टीचर को किंतु टीचर शुड aim to केवल stay within the curriculum and ensure that children are trained as per the curriculum कोन हे जीवो ना रॉन्ग हे जीवो तो राइट ऑप्शन एठी कोन से पचार थिला कोटा नु हो ऑप्शन नंबर 4 तो नेक्स्ट देखिबे क्वेश्चन नंबर 20 expert teachers are in possession expert teachers are in possession of all knowledge and expertise within the classroom. Students are viewed solely as the recipient. केवल कौन एठी कहीदेला से बुझीदेवा आगे नॉलेज और इनफॉरमेशन स्टूडेंट कौन ना केवल नॉलेज एंड इनफॉरमेशन को टीचर जहाँ प्रोवाइड करिवो पासिवली से ग्रहण करिवो तो एटा को प्रकार अप्रोच हे जीवो ना टीचर सेंटर्ड बिकॉज टीचर एठी कौन ना सेंटर रे रहिला से जहाँ नॉलेज देला इनफॉरमेशन देला ताको कौन ना रिसिप्टर भाबरे श्रुणेता भाबरे कौन कला ना स्टूडेंट ताको ग्रहण कला पासिवली तो एठी स्टूडेंट रो रोल एक्टिवली किछि एंगेज ही रहिला नाही तो एटा कोन ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच हे गेला जेते बेले स्टूडेंट मेन फोकस रे रहिबो टीचर फैसिलिटेटर हे जिवो सेते बेले एटा कोन हे जिवो ना स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रहिबो फैसिलिटेटर हे जिवो टीचर सेते बेले कोन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हैंड्स ऑन अप्रोच तो हमर कोन रहि जाउ ना आमर एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जोटा केवल आमे काम करके जो एंगेज रहा लर्निंग प्रोसेस रे एनक्वारी बेस्ड होची ना कोन ना रिसर्च करके जोटा आमे एनक्वारी करके रिसर्च करके एनक्वारी बेस्ड कोन ना एनक्वारी करके सर्च करके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रे जोटा आमे करबा एटा एनक्वारी बेस्ड अप्रोच हे जीवो तो एठी राइट ऑप्शन कौन ना क्वेश्चन नंबर 20 रे राइट ऑप्शन होगा टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट देखिबा कौन 21 क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रे कौन हे जीवो ना बिकॉज़ स्टूडेंट पचारा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रो एडवांटेजेस कौन बिकॉज स्टूडेंट आर टॉकिंग क्लासरूम मे ऑफन बी नॉइजी एंड चाओटिक रॉन्ग से यदि केवल बदमाशी कला क्लासरूम रे सेटा कोन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रे जाउची कि ना टोटली रॉन्ग बिकॉज द टीचर डज नॉट ऑलवेज डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू ऑल स्टूडेंट एट वंस सम स्टूडेंट मे मिस इंपोर्टेंट फैक्ट्स तो टीचर कोन ना डज नॉट ऑलवेज डिलीवर इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स दैट किछि समय रे केवल टीचर दबा स्टूडेंट ग्रहण करिवे सेटा भी नुह स्टूडेंट अप्रोच तो कोन ना स्टूडेंट लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग आस्क क्वेश्चन कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली तो एटा कोन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रे कोडा गला स्टूडेंट लर्न करिवो डायरेक्टली निज अंडरस्टैंडिंग बेसिस रे क्वेश्चन पचारिबो टास्क कंप्लीट करिवो some student prefer to work alone so group work can be problematic तो एठी appropriate option कोटा option number 3 हे जिवो appropriate answer next देखिबा 22 human voice telephonic conversation audio disc tapes gramophone records radio broadcast comes under which category of TLM teaching learning material तो हमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी गोटे बड़ चैप्टर देखिया जदी TLM बहुत प्रकार अछि ऑडियो वीडियो काइनेस्थेटिक जोटा कि हम कहले ऑडियो केवल
here video both here and see kinesthetic रे whole body work तो एठी कोन पचारची ना वॉइस ह्यूमन रो वॉइस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑडियो डिस्क टेप ग्रामोफोन रे केवल हमें कथा होंती तो रेडियो ब्रॉडकास्ट केवल सुनंती तो को कैटेगरी रे गला एटा ना ऑडियो टीएलएम रे गला तो एठी राइट आंसर कोडा हबो ना ऑडियो टीएलएम क्वेश्चन नंबर 22 गला देन देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 competency based education competency based एजुकेशन रे हम कौन देखिबा ना चिल्ड्रेन मानन को हमें competency based education रे कौन देखि कि दबा ना सेमानंकर लेवल काम करिवार लेवल ability and competency दक्षता देखि कि हमें जते बेले एजुकेशन दबा सेते बेले कोन हे जिवो ना competency based education हे जिवो तो देखिबा कोटा गोटे नुह एस्पेक्ट competency based education ना हाई डिग्री ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ठीक अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग हाई लेवल रहिले ही हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन दबा तो इंस्ट्रक्शन कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट देयर माइंड वे वंडर एंड दे मे मिस इंपोर्टेंट फैक्ट जदि हमें तांको लेवल एबिलिटी एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंसी बेस्ड रे दउचंती इंस्ट्रक्शन ताले से काई बोरिंग हेबे तो एटा टिके देखिबा स्टूडेंट रिसीव रैपिड डिफरेंशिएटेड सपोर्ट जदि तांको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जहा को दबा तार क्रिटिकल हायर लेवल ऑफ थिंकिंग थिबो क्रिटिकली से प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड बा एटीट्यूड भी तार भलो थिबो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट कोन ना डिफरेंशिएटेड सपोर्ट पाइले ही से तार मल्टीपल लेवल रे तार डेवलपमेंट ही परिबो तो एटा भी करेक्ट offers opportunity for all students not just the advanced but also those who are struggling opportunity दबा स्टूडेंट मानन को opportunity दबा केवल एडवांस नुए जो माने स्ट्रगल भी करछन से मानन भी तो एटा भी एप्रोप्रिएट तो एटा कोटा एस्पेक्ट हबोनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ना इंस्ट्रक्शन कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट एटा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हबो को बेसिस रे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जदि हमें देखिबा नेक्स्ट देखिबा कोन ना क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल रो कोटा गोटे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स नुह तो नुह पचरची नॉट देखिबा शुड बी सिंपल एज पॉसिबल टीएलएम रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड टू द स्केल मापयुक्त उपयुक्त माप विशिष्ट उपयुक्त माप विशिष्ट जदि हेतिबो भी हेतिबो कोन उपयुक्त माप विशिष्ट हबा दरकार टीएलएम टाकू जहां हमें जहां टीचर क्लासरूम रे कोन पढेइबो ताहा उपयुक्त परिमाप रे होइतिबा दरकार इट इज द स्टूडेंट्स रेस्पोंसिबिलिटी टू क्रिएट ऑल टीएलएम फॉर टीचर्स नो it is advisable to pre-test the TLM को कोन ठीक रिवाइज करिकी एको करेक्ट करिकी मॉडिफाई करिकी क्लासरूम रे आनिबा दरकार सेटा कहा ड्यूटी टीचर तो कि रेस्पोंसिबिलिटी स्टूडेंट रो नुह जे से क्रिएट करिकी TLM दबा का टीचर को तो इट इज नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स रे कोडा जिबा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट देखिबा कोन क्वेश्चन नंबर 25 चीटिंग is often done by the student cheating student केते बेले करिवो ना जेते बेले से पाठ पढी नथिबो आ कोन पई चीटिंग करिवो ना मार्क दरकार पाठ पढेनी मार्क केम आनिबी ना सेते बेले से चीटिंग करिवो तो गेट ए हायर ग्रेड बिकॉज़ दे हैव
understood the content जदि content को understood करना cheating कहीं करवा they do not like surprise test to help their peers केबे भी नुह तो एठी कोन ना cheating से कोन पई करबो get a higher order sorry get a higher grade next देखिबा कोन ना 25 रो option number 1 is the correct next देखिबा question number 26 the type of testing used to cause the student learning during the lesson viewed as more of a natural part of teaching learning process is termed as that कोन हम फोकस करिबा gist ऊपर learning during lesson समेटिव असेसमेंट केते बेले ना असेसमेंट हमें जानि छंती बहुत प्रकार ता मधुर समेटिव फॉर्मेटिव मोस्ट इंपोर्टेंट समेटिव असेसमेंट कोन ना at the end of instruction at the end of instruction जते बेले हमें असेसमेंट करबा सेटा कोन हे जिवो ना समेटिव फॉर्मेटिव कोन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जते बेले हमें असेसमेंट करंती सेते बेले कोन हे जिवो ना फॉर्मेटिव असेसमेंट हे जिवो देन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कोन हे जिवो ना जते बेले हमें स्टूडेंट रो स्ट्रेंथ और वीकनेस को असेस करबा को चाहिबा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जतले असेस करियो सेतले से कोन हबो ना डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ताको के करबो ना टीचर करबो आ तो रिमेडियल टीचिंग मध्ये ता स्ट्रेंथ और वीकनेस देखि दबो एठी पचरची कोन ना लर्निंग ड्यूरिंग लेसन ड्यूरिंग कथा आसला माने एठी करेक्ट हे जो कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 27 टीचर्स यूज मेनी मेथड टू टेस्ट whether student have understood the topic which technique among these is not used commonly by the teacher से कम पछारची ना जत्ते बेले टीचर बहुत सारा मेथड यूज करिवो केते बेले ना स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक कोन भाई गोटे स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करिया पई टीचर जत्ते बेले मल्टीपल मेथड्स यूज करैबो तो को टेक्निक ता यूज करा जाई नाही साधारणतः को टेक्निक ता यूज करेनी ना रिपीटेटिव चैंटिंग करिवो नाही से ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारिबो डेवलप करिबा पई कोन ना डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट गिविंग स्टूडेंट ए चांस टू आस्क क्वेश्चन ताको क्वेश्चन पचारिबार मध्ये सुजोग दबो ना कि से केवल टीचर निजे कहउथबो सरप्राइज टेस्ट मध्ये जेंति यूनिट टेस्ट हे गला ड्यूरिंग द लेसन हमें जो क्विजेस करूछंदी सेगुडी को मध्ये करिवो किंतु करिवो नाही कोन ना रिपीटेटिव चैंटिंग बारंबार गोटे जिंस को रिपीट करिवो नाही सो सेठी पचर थिला कोन ना which technique among these not used commonly by the teacher na repetitive chanting option number 2 is the correct answer next देखिबा continuous comprehensive evaluation require teachers to have a good competency देखिबो select the one which is not applicable to improving teachers मानकर को एबिलिटी बा कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना एप्लीकेबल नुहे कोथरे कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ने कोन देखबा ना लैक ऑफ इनसाइट इनटू कोर्स डिटेल नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ इवैल्यूएशन टू प्रोवाइड रिमेडियल टीचिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट असेसमेंट टूल दैट आर क्राइटेरियन बेस्ड एप्रोप्रिएट एटा तो एब्सोल्युटली राइट एबिलिटी थिबा दरकार जे से निजे क्राइटेरिया बेस्ड अप्रोच रे कोन असेस करिवो कॉम्पिटेंसी को मेंटेन करूथबो रिकॉर्ड को नॉलेज एंड स्किल ऑफ इवैल्यूएशन टू प्रोवाइड रिमेडियल टीचिंग मध्ये स्टूडेंट मानकर स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानि के देई परथबो किंतु कोन नथिबा दरकार इनएप्रोप्रिएट ठिकाना ना लैक ऑफ इनसाइट इनटू कोर्स डिटेल जदि से कोर्स रो डिटेल जदि टीचर जान नथिबो से स्टूडेंट मानन को कोन बा सीसीई रे असेस करिवो तो ये appropriate answer कौन ना ऑप्शन नंबर 1 not applicable to improving teachers
नेक्स्ट देखिए कौन ना क्वेश्चन नंबर 29 इट डैश involves helpful structure interaction between an adult and a child with the aim of helping child achieve a specific goal for a allowing the child to achieve higher level of development आमे जानचंदी कोन एठी कोन आसले ना हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट गोटे इंटरैक्ट कहार ना चाइल्ड रो कहार ना गोटे स्ट्रक्चर इंटरैक्शन adult और चाइल्ड मध्य रे हबो ता भीतर या भीतर कोटा हबो सेटा देखिबा ना हम जानचन जेमति भाइगोर्स्की वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट कोन देथिले ना सोशियो कल्चरल थ्योरी सी कौन ना तीनटा फैक्टर को बेस करके तांगर सोशियो कल्चरल थ्योरी देथिले कौन ना हमरे कौन देथिले एमकेओ जेपीडी आउटे कौन रियल लैंग्वेज तो एमक्यू विषय से कौन कही इठी हमर कौन ना जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जेपीडी हूँ मझीटा हमर प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एटा हूँ कौन जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट एटा कौन ना एमकेओ द एक्चुअल डेवलपमेंट रे कौन ना चाइल्ड ओन नॉलेज जेपीडी रे कौन ना से कौन कला ना ठीक हमारा कौन ना जेपीडी रे कौन ना प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा द्वारा है विथ द हेल्प ऑफ एमकेओ मोर नॉलेजेबल पर्सन नो मोर नॉलेजेबल पर्सन जेते बेले गोटे चाइल्ड निजर निज ठारू बड़ एक्सपीरियंस लोकन टू हेल्प नहीं कि निजर गोल को अचीव करुची सेते बेले कौन हे जिवो ना तार एमकेओ बा स्कैफोल्डिंग हे जिवो स्कैफोल्डिंग हे जिवो कहा द्वारा ना एडल्ट और चाइल्ड रो इंटरैक्शन रे चाइल्ड जो गोल बा तार अचीव करिवो हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट को सेटा कौन हे जिवो स्कैफोल्डिंग जे स्कैफोल्डिंग दबो ताको कौन कहंती ना द एमकेओ मोर नॉलेजेबल पर्सन बा स्कैफोल्डर बुझिला तो राइट आंसर एटी कहि जिवो ना ऑप्शन नंबर 1 स्कैफोल्डिंग क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग रोल प्ले ड्यूरिंग टीचिंग नॉट एन एडवांटेज कोटा गोटे एडवांटेज नुह आम जिते रोल प्ले करूछंदी टीचिंग रे गुड एनर्जी प्रमोट एम्पैथी ऑफ ट्रेंडिंग फॉर अदर सिचुएशन एनकरेज क्रिएटिविटी इन लर्निंग अनफैमिलियर टीममेट्स एटा टीममेट्स may lead to slow progress गुड एनर्जी आसीबो एम्पैथी हबो पियर मानक मध्य रे सिचुएशन को देखि एनकरेज क्रिएटिविटी ठीक 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 कौन हबनी नॉट एन एडवांटेज ना अनफैमिलियर टीममेट्स मे लीड टू स्लो प्रोग्रेस रोल प्ले कले हमर एटा इनअप्रोप्रिएट हे जिवो नो कौन नॉट एन एडवांटेज हे जिवो नेक्स्ट देखियो कौन ना एटा हम थिला फास्ट पार्ट ता थिला कोन ना केवल पेपर 1 पेडागोजी सीडीपी ऊपर एबे हम देखिबा सब्जेक्ट वाइज तो एबे कोन हम मैथ ऊपर कोन पेडागोजी असला देखिबा मैथ ऊपर पेडागोजी क्वेश्चन नंबर 31
In the mathematics class, communication refers to developing the capacity. गोटे मैथमेटिक्स क्लास रे कम्युनिकेशन कहा को रेफर करबा कम्युनिकेशन द्वारा कोन डेवलप होबो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन द डाटा बाय लुकिंग एट द बार ग्राफ टू गिव promote response to a questions asked in the class to organize consolidate express mathematical thinking to in a classroom to contradict the views of other problems of mathematics कौन ना एठी बेसी appropriate कौन ना mathematics क्लास रे कौन हमर डेवलप होबो कम्युनिकेशन द्वारा ना ऑर्गेनाइज हे परबो जिंस ऑर्गेनाइज हे परबो कंसोलिडेट करि परबा हमें एक्सप्रेस करबा कोन ना मैथमेटिकल थिंकिंग तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन एठी कोन ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट देखिबा कोन नहीं पीपल वाज आस्क्ड टू ऐड 21 to 100 but he wrote 112 after adding. To rectify such error committed by the people, which of the following methods should be the teacher add? जेतेबेले गोटे पिला को हमें ऐड करिया पई कहउचंती 21 to 100 सेतेबेले से कोन लिखिला ना 112 आंसर बाहर करके ऐड करके कला तो हमें ए भूल टाको संशोधन करिया पई ताको कोन कहि परिबा करि परिबा बा सजेशन कोन होबो टीचर रो to give exercise on counting the number, explain the place of value of digit, practicing addition, all options are correct. तो ताको हम एक्सरसाइज करबा नै एटा लिटरेचर नुहे जे ताको एक्सरसाइज करैबा प्रैक्टिस एडिशन मिश्रण सिखैबा ना ताको एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ द डिजिट हमें नंबर रो वैल्यू ताको एक्सप्लेन करबा अंडरस्टैंड करैबा जादर कि से बुझी परिबा और ठीक से करबा तो एठी एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 2 is the correct बा appropriate क्वेश्चन नंबर 32 रो नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 33 NCF 2005 emphasis on which of the following NCF 2005 emphasis कहा पर कला देखिबा succeeding in mathematics should be compulsory for every child. Mathematics shall be taught to selective student. A student should be tested first for their logical mathematical ability. Mathematics curriculum shall be separate for low achievers. कौन हला ना मैथ आमे कौन NCF 2000 रेकमेंड कौन कला ना NCF 2008 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रेकमेंड कला कौन ना समस्त शिशु कौन करिवे ना गणित रे साफल्य पई कौन करिवे ना गणित रे सफल हेबे बा साफल्यता प्राप्त करिवे को करिबा उचित कोठी ना हमरा एवरी चाइल्ड मानक पई कोन गणित रे से सफल हेबा उचित कहला बाध्य कहनी NCF 2005 केवल रेकमेंड कला से बाध्य करिनी क्वेश्चन नंबर 34 कौन है गला ना dash is not a practice to be followed by the teacher in a mathematics class कौन ना not a practice गोटे मैथ टीचर कौन करिवो नाही ना encourage thinking through simple example encourage करिवो through simple examples encourage करिवो thinking through real life examples creating an opportunity for self assessment now working out all the problems गोटे मैथ टीचर कौन करिबो ना सिंपल एग्जांपल्स दबो रियल लाइफ एग्जांपल सहित लिंक करिबो क्रिएट करिबो अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट बट वर्किंग आउट ऑल द प्रॉब्लम करियो बोली मानने नहीं तो नॉट प्रैक्टिस कोन ना वर्किंग आउट ऑल द प्रॉब्लम Option number 4 is the correct answer of question number 34. Question number 35 देखिबा Kunal is studying in a class V. Class V, he can classify various types of triangles in different category. देखिबा ना
क्लास 5 रे पढुची से कौन करूची ना क्लासिफाई करूची डिफरेंट कैटेगरी ताकू डिवाइड करूची डिफिकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग का abstract proof for the sum of three angles triangle to be always 180 degree according to Piaget cognitive theory he is at which of the following stage classify कला सेरेशन कला कौन है जबो ना हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे जोटी से लॉजिकली थिंक कला इंडक्टिवली थिंक कला एटा कौन है जबो ना हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो एठी राइट आंसर कौन है ना ऑप्शन नंबर 2 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्वेश्चन नंबर 36 which two numbers when multiplied with each other gives the product as 12 से कौन पचारछि ना टू नंबर दीटा नंबर जतले हम मल्टीप्लाई करूछन सेतबे कोन ना प्रोडक्ट 12 आसीबो तो एटा कोन हेउछि क्लोज एंडेड ओपन एंडेड ना डिफिकल्ट क्वेश्चन ना मेटा कॉग्निटिव टर्म जेतेबेले दीटा नंबर मल्टीप्लाई होची 12 आसीबो त हमर कोन मल्टीपल आंसर आसुची केवल गोटे नुहे जे कोन हे जाउची ना हमर 6 into 3 6 into कोन हे जाउची ना हमर जेतेबेले करछुनी 12 तो कोन करबा ना 6 into 2 कले भी हमर प्रोडक्ट 12 आसीबो 2 into 6 कले भी हमर 12 आसीबो 4 into 3 भी हम जदी करिबा 12 आसीबो 3 into 4 करछन जदी भी हमर प्रोडक्ट 12 आसीबो देन जदी हम करछुंदी 12 into 1 सेते बळे भी हमर 12 तो मल्टीपल आंसर आसीला तो एटा क्लोज एंडेड तो बिल्कुल नो क्लोज एंडेड केवल कोन फिक्स्ड आंसर गोटी आंसर आसीबो मोस्ट डिफिकल्ट वे टेन नो सॉल्यूशन एमिति भी नहीं ओपन एंडेड हे जिवो कहिना मोर देन वन आंसर आसी सेति कोन ना एटा ओपन एंडेड क्वेश्चन आज इट हैज मोर देन वन आंसर तो क्वेश्चन नंबर 36 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट देन देखिबा कोन ना क्वेश्चन नंबर 37 dash teaching learning material is best suited to explain 1 by 20 is greater than 1 by 200 to class IV student से कौन कहिला ना आमे को TLM माध्यम रे देखै परिबा जे 1:10 greater than 1 by 200 तो कोथरे ना कैलिग्राफी रे हमें कोन देखै परिबा आर्ट विजुअल देखै परिबा एटा ओडे कैलिग्राफी इज द टाइप ऑफ आर्ट विजुअल कोन हला आर्ट विजुअल रे कोन देखै परिबा हमें आर्ट विजुअल रे कैलिग्राफी यूज फॉर आर्ट विजुअल्स फॉर राइटिंग लर्निंग पाई कैलिग्राफी 10 into 10 square grid यूज फॉर कॉलम and rows then नंबर चार्ट रे केवल नंबर शो करिबा डायरेंस ब्लॉक रे कोन डायरेंस ब्लॉक रे हम कोन देखिबा ना हमें इट इज अ टाइप ऑफ वुडन और प्लास्टिक क्यूब्स जोडा कि यूज हुए कोथि पई ना हमरा रिप्रेजेंट द नंबर्स तो एठी कोन राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर 4 teaching learning material is best suited to explain 1 by 20 is greater than 1 by 200 to class IB student कौन है जीवन ना dance block then कौन next देखिवा 38 question according to NCF 2005 is not an objective of teaching mathematics at primary level रे कोडे कोडे teaching रा objective
नुह देखिबा गण अछि ना प्रिपेयरिंग टू लर्न हाई एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल रे हाई और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स तो पिला मन मुंडर पसिबनी प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्राइमरी लेवल रे then making mathematical part of experience of students life all options are correct तो आमे तो एठी आंसर कोन हबो राइट आंसर ना आमे डायरेक्ट प्राइमरी लेवल रे स्टूडेंट तो प्रॉब्लम सॉल्व करबनी ना एक्सपीरियंस भी स्टूडेंट दे परिबो नाही एते छोट एज रे तो ताकू कोन आमे प्रिपेयर करबा हाई एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स से केमदी करि परिबो जे मने मने केमदी हिसाब करि परिबो 1:2 2:3 एमसे एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स ताकू दिया जीवो तो ठीक ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 38 39 देखिबा कोन अछि ना written symbol manipulative models static pictures spoken and real world situation or context are 5 ways to represent mathematical terminology formula na thinking ideas ना जियोमेट्रिकल प्रूफ तो टर्म नेम तो नुह केवल एगुड़ा 5 फैक्टर्स केवल फॉर्मूला भी नुह तो एटा कोन ना गोटे मैथमेटिकल थिंकिंग आ आइडिया को डिस्क्राइब करिवो कोन ना ए 5 सिचुएशन कोन रिटन लैंग्वेज सिंबल मैनिपुलेटिव मॉडल स्टैटिक पिक्चर स्पोकन एंड रियल वर्ल्ड सिचुएशन नेक्स्ट देखिबा कोन तो ठीक कोन हेला मैथमेटिकल थिंकिंग एंड आइडिया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट then question number 40 should be the most important feature of mathematics textbook at primary level रे most important feature कौन हबो ना concept should be presented from complex to simple concrete to abstract to concrete ना linked with higher classes प्राइमरी लेवल रे हम तो लिंक कर दबानी हायर क्लासेस सहित कॉम्प्लेक्स रू भी जाई परिबानी एब्स्ट्रैक्ट रू कंक्रीट भी जाई परिबानी कोन ना कंक्रीट रू एब्स्ट्रैक्ट सॉरी कंक्रीट रू एब्स्ट्रैक्ट जाई परिबानी एब्स्ट्रैक्ट रू कंक्रीट हमें जाई परिबा कोन हबो ना हमें भी जानिले जे पिल्ला को प्राइमरी लेवल रे कोन हमें मैथमेटिक्स जिंसु को एब्स्ट्रैक्टली तांको आगे लर्न करिया को दबा तो एठी कोन हे जो राइट हे जो कोन ऑप्शन नंबर 3 then देखिबा कोन ना which of the following statement is not correct about environmental awareness एटा आसीगला हमर कोन ईवीएस पार्ट रे पेडागोजी एटा कोन ना हमर ईवीएस सब्जेक्ट रे पेडागोजी बोले आसीला तो ईवीएस रे कोन देखिबा which of the following statement is not correct नॉट वाला क्वेश्चन हमको बेसी आसुची तो हम ଟିକେ लक्ष्य करबा नॉट कोट देछि नॉट करेक्ट एनवायरमेंटल अवेयरनेस ऊपर मेकिंग पीपल अवेयर कैन फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जदि हम आवर न करूचंदी तो कोन ना हमर अधिक एक्सप्लॉयटेशन होछि नेचुरल रिसोर्स रा ना मीडिया एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट कोन ना हम जदि मीडिया और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इंपोर्टेंट रोल दे दोचंदी तले अवेयरनेस इंक्रीज हे जिवो इट हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कोन एटा डायरेक्ट रिजल्ट पकेबो इफेक्ट पकेबो कोन ना प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन कहा करे भाई एनवायरनमेंट को नो ऑप्शन इज करेक्ट तो हमको पचाछि नॉट करेक्ट माने इनअप्रोप्रिएट हमें देखिबा तो मीडिया और नॉन गवर्नमेंट को जदी हमें इंपोर्टेंट रोल दउचंदी तो अवेयरनेस ऑब्वियसली इंक्रीज हेबो तापर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट रे भी इंपैक्ट पकेबो एनवायरमेंटल अवेयरनेस तो एटा भी करेक्ट तो देखियो माने ना मेक पीपल अवेयर कैन कॉज जदी हम लोक मान को अधिक अवेयर करूचंदी अधिक एक्सप्लॉयटेशन हबो नेचुरल रिसोर्स ना जदी हम अवेयर करूचंदी तो कमी जीवो सेतिपय कोन इनअप्रोप्रिएट कोन हैला मेकिंग पीपल अवेयर कैन कॉज फर्दर एक्सप्लॉयटेशन तो नॉट करेक्ट हे जो हमर ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 42 how many types of elements of environment are there in environmental studies so कौन है जिमा हमरो environment रो element केते प्रकार देखिबा हमरो फर्स्ट एलिमेंट रहला लिथोस्फियर
नेक्स्ट कौन आसीजिबो एटमॉस्फेयर नेक्स्ट कौन आसीजिबो हाइड्रोस्फीयर तो बेसिकली मेनली इंपोर्टेंट मेजर इंपोर्टेंट एलिमेंट्स कौन है नंबर 3टा लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42 नेक्स्ट देखिबा ना टीचिंग ऑफ ईवीएस पढ़िबा द्वारा कौन एनकरेज हबो हमरो स्किल्स रे व्हिच आर द कोर इंक्वायरी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग डिटरमिनेशन इन्फरिंग सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सच ए स्किल आम ईवीएस पढ़िबा द्वारा कौन हमरो स्किल बा प्रोसेस रे कोडा कोडा हे परबो नाही ए ऑप्शन विदर हम देखिबा कोन ना डिटरमिनेशन इन्फरिंग ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्ट आमे ईवीएस पढ़िबा द्वारा परिवेश को प्रेडिक्ट करि परबा ऑब्जर्व करि परबा इन्फरिंग करि परबा इन्फरिंग करि परबा ना क्लासिफाई करि परबा कि डिटरमिनेशन निरूपण करि परबा निरूपण करि परबा नाही तो एठी कोन हे जो फॉलोइंग इज नॉट ए सच स्किल टीचिंग ईवीएस द्वारा भी डिटरमिनेशन करि परबा नाही तो एठी राइट आंसर कोन हे जीवन ना ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट देखिबा कोन क्वेश्चन नंबर 44 आफ्टर टीचिंग द लेसन ऑन एनिमल्स शीतल अरेंज ए विजिट of her class IV student to the zoo. What is the purpose of this visit? टीचिंग समय रे जेतेबेले हम शीतल को कोन ना क्लास आईवी स्टैंडर्ड 4th क्लास स्टूडेंट को अबे नै के जाउचोनी जू को देन देखौ जदा हम सेठी कोन एनिमल्स तो एटा कोन डायरेक्ट हला डायरेक्ट लर्निंग हे गेला ओडे से जिंस पढ़ी के आसिले देन ताको देखिले तो तांगर अंडरस्टैंडिंग टा कोन एनहांस हे गेला तो ये कौन जीव ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन रे गला तो देखिए कौन ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस विजिट तो ताको कौन पई ताको एनिमल्स देखिया पई विजिट करा गला टू डेवलप स्किल्स ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन इनअप्रोप्रिएट टू हैव ए चेंज इन द डेली टाइम टेबल रूटीन को चेंज करे पई ना टू कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन टू डेवलप सेंसिटाइजेशन अबाउट हाउ टू डेमोस्टिकेट एनिमल नो तो एटे राइट आंसर कौन है जीवन टू कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन सहित कौन ना क्लासरूम लर्निंग को कनेक्ट करबा पई कोन करला ताको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन शीतल को दिया गला नेक्स्ट देखिबा कौन ना क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी तो एठी कौन ना हेगला हमरा नॉट रिलेटेड to the significance of environment study रे not significant not importance कहार नाही environmental study रे तो locates and comprehend relationship between natural social lateral environment engaged in exploratory hands-on activity helping in learning all the definition and concept पचारची not related तो all the definition concept केवल गुणा में definition और concept कौन पे पढ़बा गुड मार्क्स आनिबा पई एटा इंपोर्टेंट नो हो तो नॉट रिलेटेड हे जिवो ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम यूनिसेफ वर्ल्ड बैंक यूनेस्को ऑल ऑप्शन आर करेक्ट या भीतर कोन सिटी और केउ ऑर्गेनाइजेशन टी सपोर्ट करथिला एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम को ना यूनिसेफ भी करथिला वर्ल्ड बैंक भी करथिला यूनेस्को भी करथिला ऑल ऑप्शन आर करेक्ट यूनिसेफ वर्ल्ड बैंक यूनेस्को तीनोटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करथिले कोहगु ना एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करथिले तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 47 एनवायरमेंट स्टडी इज एसेंशियल परिवेश शिक्षा कौन पे हमर दरकार ना फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड नेशन टू मेक सोशल लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल टू इरिटेट स्टूडेंट एंड कंफ्यूज देयर माइंड बोथ
for the progress of society and nation and irritate student, confuse their mind. तो ये गोटे नेगेटिव सेंटेंस है गला। तो आमे कोन देखिबे ना for the progress of society and nation पई हमर environmental studies essential। नेक्स्ट देखिबा यार तले करेक्ट आंसर कोन हेगला ना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 48, Wildlife Week is celebrated every year during the first week of October. Option number 3 is the correct answer. Then next देखिबा question number 49, an EVS teacher is using NCERT textbook as a resource to teach children. Which of the following statement does not satisfy the need of preparing NCERT textbook as per the resource? कौन पे गोटे टीचर EVS टीचर NCERT रो टेक्स्टबुक को रिसोर्स भाबे प्रिफर करिवो नाही, डज नॉट सैटिस्फाई, प्रिफर करिवो चाहिबनी ना। NCERT टेक्स्टबुक कनेक्ट चाइल्ड आउटसाइड लाइफ विथ क्लासरूम, जदी एटा करथाम तो से प्रिफर टीचर गोटे करिवो काइना कनेक्ट करिवो से रियल लाइफ एग्जांपल विथ द बुकिश नॉलेज। देन NCERT टेक्स्टबुक आर रिटन इन इजी लैंग्वेज व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड। जदी रिटन इन इजी लैंग्वेज हो तो मोस्टली टीचर प्रिफर करिवे को ना NCERT बुक करिवे पढिबा पई। देन NCERT टेक्स्टबुक कंटेन पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशन व्हिच नीड द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट इजीली। जदी पिक्चर रहिबो एग्जांपल्स रहिबो तो टीचर को मध्य इजीली इलस्ट्रेट करिया पे हेल्पफुल होबो, देन तो गोटे टीचर यूज करिवो। NCERT टेक्स्टबुक प्रमोट रोट लर्निंग, जदि केवल मेमोराइजेशन ऊपर फोकस करिवो NCERT मेमोराइजेशन ऊपर फोकस कला, देन टीचर कोन प्रिफर करिवो नाही NCERT टेक्स्टबुक को यूज करिया पई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे क्लासरूम रे। तो हमको पचारछि डज नॉट सैटिस्फाई, को सेंटेंस ता डज नॉट सैटिस्फाई करछि ना NCERT टेक्स्टबुक प्रमोट रोट लर्निंग। दैट करेक्ट ऑप्शन है जिवो ऑप्शन नंबर 4। देन देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 50 जोटा कि हमर लास्ट क्वेश्चन कोन ना, an EVS teacher of class IV asked student to put their worksheet, observation, drawing and reports in a folder. This folder can be called, तो हमें जानिया प्रथमे कोन ना anecdotal records कोन ना एटा गोटे टेम्पोरारी डॉक्यूमेंट जो थे कि कौन ना चाइल्ड रो स्पेसिफिक बा स्पेशल एंड स्पेशल एक्टिविटीज रो डाटा रहिबो, एक्टिविटी रो डाटा रहिबो। से पचारछि कोन ना टोटल वर्कशीट, ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग सबू तक रिपोर्ट रहिया दरकार। एथरे तो केवल स्पेसिफिक रिपोर्ट रहिला, किंतु बिहेवियरल रिकॉर्ड्स रे कोन ना केवल बिहेवियर, पिल्लार बिहेवियर केमिति से जिंसटा मेंशन हला कोठी ना हमर बिहेवियरल रिकॉर्ड्स रे। देन प्रोजेक्ट और असाइनमेंट देले कोन ना तार कॉग्निटिव रिलेटेड जिंस हमें रिकॉर्ड करी रखिबा, नॉलेज रिलेटेड प्रोजेक्ट और असाइनमेंट रे। पोर्टफोलियो रे कोन ना पोर्टफोलियो रिफर्स टू ए डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट। पोर्टफोलियो कोन ना गोटे रिटन डॉक्यूमेंट जो थरे कि हमें चिल्ड्रेन न कोन A to Z एक्टिविटी स्कूल रे कोन करूची न करूची टीचर रखिबे कंटेंट करके ओथरे ना हमर पोर्टफोलियो रे। तो एठी कोन देइची ना टोटल पिलर वर्कशीट, ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग, रिपोर्ट इन ए फोल्डर रे रखियो कोन कहजे ना पोर्टफोलियो। तो करेक्ट आंसर हे जिवो कोन ना पोर्टफोलियो। तो आज डिस्कशन रे 2019 रे कोन पेडागोजी और सब्जेक्ट पेडागोजी रो कोन क्वेश्चन आस्थिला हम डिस्कस कले। नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि पेडागोजी और चाइल्ड पेडागोजी रो कोन सब क्वेश्चन आसीची हमें देखिबा।